हेलो नीट एस्पिरेंट। मैं हूं मोहम्मद नूरुल अली, एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डिब्रूगढ़। आप सबका स्वागत करता हूं हमारे नीट टेस्ट सेशन के आज के वीडियो सॉल्यूशंस में। हमारे नीट टेस्ट सीरीज के हर एक सेशन में आपको 30 चुने हुए क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि नीट के लिए हाईली प्रोबेबल है। और इस वीडियो सॉल्यूशंस में हम आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑप्शंस को भी क्विकली एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन के साथ साथ उस टॉपिक का भी एक क्विक रिवीजन हो जाए। हैप्पी लर्निंग। प्रेजेंस ऑफ ट्रू सेलोम बट एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म। प्रेजेंस ऑफ ट्रू सेलोम एंड मेटामेरिज्म। absence of true cellum but presence of metamerism, and presence of neither true cellum nor metamerism. क्या लगता है एस्करिस क्या है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एस्केलमेंथिस, ओके। एंड दे आर सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म। बट इनमें क्या होता है, एस्केलमेंथिस में क्या होता है, दे आर सीडोसिलोमेट, यानी कि दे हैव नो ट्रू सिलोम। यानी कि जिसमें जिसमें प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम है हम वो कर सकता है। प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम यानी कि ये नहीं हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम ये भी हो नहीं हो सकता है। एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम ये तक सही है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम नहीं है। बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, एंड वी नो दैट मेटामेरिज्म इज शोन ओनली फ्रॉम दिस एनलिट्स, राइट। यानी कि ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि दे हैव नाइदर ट्रू सिलोम नॉर मैथमेरिज्म, राइट। यानी आंसर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, which of the following statements about certain given animals is correct? दिया है कि राउंड वॉर्म्स यानी कि एस्केलमेंथिस आर सीरोसेलोमेट्स, मोलस्का आर एसेलोमेट, insect are pseudocelomates, flatworms are coelomates. See, coelomates, in case of coelomates, Platyhelminthes, this is what Platyhelminthes is, a coelomate. Next, Aschelminthes, this is pseudocoelomate. pseudocoelomate. उसके बाद जितने सारे हैं, यानी कि सिलोमेट एस्केलमेंथिस के बाद, यानी कि ये हो गया एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब क्या है, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। इसके बाद क्या है, दे आर सिलोमेट, यानी कि यू सिलोमेट। तो इस हिसाब से आंसर मिलाएंगे। पहले राउंड वॉर्म्स यानी कि एस्केलमेंथिस सीडोसिलोमेट्स, ये सही है। मोलस्का और एसिलोमेट, मोलस्का एसिलोमेट है नहीं, दे आर यू सिलोमेट, सो ये गलत हो गया। इंसेक्ट्स आर सीडोसिलोमेट्स, यानी कि आर्थ्रोपोडा और सीडोसिलोमेट है क्या? नहीं, दे आर सिलोमेट्स, ओके, ये भी गलत हो गया। फ्लैट वर्म्स आर सिलोमेट्स, ये भी गलत, बिकॉज फ्लैट वर्म्स आर एसिलोमेट, राइट। यानी कि आंसर 1 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्लैट वर्म्स? They have flame cells, nephridia, malpighian tubules, and green glands. You can remember this nephridia is in annelida. Malpighian tubules, green glands, this is in arthropoda. बच्चा कौन? Flame cells. And remember that flame cells helps in excretion and osmoregulation in flatworms. And these are special cells, right? H-shaped cells. What? H-shaped cells. So answer 1 is the correct answer. In helminthes, flame cells are component of their, not helminthes, here will be platyhelminthes, right? In platyhelminthes, flame cells are component of their reproductive system, excretory system, nervous system, and respiratory system. In the previous question, we have seen that you can see that flame cells helps in excretion and osmoregulation. Just it is reversed of this question, that options become now question, that in platyhelminthes the flame cells are component of their, yes, excretory system, right? Option B is. Next, elephantiasis caused by.
Elephantiasis is a disease in which the legs or the lower limbs become the legs like elephant, right? आपने देखा होगा कि एलिफेंट का जो पैर है कितना मोटा मोटा है। तो उसी तरह क्या होता है अगर ह्यूमन बींग्स में अगर ये एलिफेंटाइसिस डिजीज हो गया तो क्या होता है, लेट मी शो यू गिव एन आइडिया। अगर ये नॉर्मल नॉर्मल पैर है, राइट, इफ इट्स अ नॉर्मल लेग, देन देयर विल बी very giant, right, very big, say or the same, but it will be very big leg। तो इसको मतलब इस ड्यू टू क्या होता है वो, यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है दैट कॉजेज दिस एलिफेंटियासिस, इट ब्लॉक्स द लिम्फेटिक सिस्टम, एंड ड्यू टू दैट क्या होता है इसमें जो लेग होता है बहुत फूल जाता है। और इसके एलिफेंटाइटिस नाम इसलिए दिया है क्योंकि हाथी जैसे लग रहा है, इफ दिस पैर। सो elephantiasis is caused by Wuchereria brandkopfti, right? You can directly remember it, Wuchereria brandkopfti. Okay. Then fasciole hepatica, they causes some disease in small intestine in the gut, right? Enterobius vermicularis हो गया, the vermicularis means vermiform appendix में, right? Like this. The pseudocoelomate animals are Platyhelminthes, Aschelminthes, Porifera, Cnidarian। इसका एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट याद रखना है कि प्लेटीहेलमिंथिस तक क्या है, ए सेलोमेट, देन एस्केलमिंथिस इज स्यूडोसेलोमेट, एंड आफ्टरवर्ड उसके बाद यानी कि एस्केलमिंथिस के बाद से जितने सारे आते हैं ये यूसेलोमेट होते हैं, यानी कि जो सीडोसेलोमेट है कौन सा हो जाएगा, एस्केलमिंथिस, यस, यानी कि पी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेक्सेस इन एस्केलमिंथिस आर मोनोशियस, डायोशियस, ट्रायोशियस एंड टेट्राओशियस। तो पहले हमको पता करना है कि एस्केलमिंथिस में सेक्सेस कैसा है। दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। व्हाट डज दिस मीन, वर्ड मीन डायमॉर्फिज्म, मतलब सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म मतलब हम बाहर से दो एनिमल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। अगर ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको हम बोलते हैं सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म, यानी कि दो अलग अलग मॉर्फोलॉजी है इनका, मेल का फीमेल का। यानी कि सेक्स करने समय यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद दो को चाहिए, राइट, टू डिफरेंट सोर्स इज नीडेड। यानी कि हार्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है, अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में दो को पाया जाता है, मेल गेमेट भी फीमेल गेमेट भी, बट if female gamete and male gametes are produced in different organisms, they are called sexual dimorphism, यानी कि they are unisexual, right, unisexual। एंड यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है डायोशियस। यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही प्रेजेंट होंगे, आइदर मेल और फीमेल। डायोशियस मतलब दो ऑर्गेनिज्म को चाहिए इस रिप्रोडक्शन करने के लिए, राइट, डायोशियस। यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड यू ऑल्सो रिमेंबर इट like unisexual, dioecious, monosexual, and the said that bisexual, monoecious. You can remember these mnemonics. Dumb, D-U-M-B, dumb। dumb मतलब क्या है, दिस इज dioecious, dioecious, unisexual, द सेम है। dioecious मतलब यूनिसेक्सुअल, मोनोशियस, bisexual, okay। Next, they are bilaterally symmetrical triploblastic animals, Tania, Fasciola, planaria, and Aschelminthes। Bilaterally symmetrical triploblastic, right? तो इसमें इफ वी सी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सारे के सारे है, लेकिन इसमें टेनिया, फेसुला, प्लेनेरिया ये तीनों क्या है, प्लेटीहेल्मिंथिस का एग्जाम्पल्स है। एंड देयर इज ओनली वन एग्जाम्पल्स, एस्केलमिंथिस। सो हम टेनिया अगर टिक करेंगे तो फेसुला भी होगा, प्लेनेरिया भी होगा, तो बेटर है, मतलब इस इज अ बेटर आंसर विल बी डी, दैट इज एस्केलमिंथिस, राइट। The process of morphologically differentiating male and female sexes is known as,
मैंने अभी अभी एक डेफिनेशन बताया कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है। अगर मॉर्फोलॉजिकली हम पहचान सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है, उसी को बताया कि प्रोसेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएटिंग मेल एंड फीमेल सेक्सेस। अगर मॉर्फोलॉजिकली मेल और फीमेल का हम डिफरेंस कर सकता है, जिस प्रोसेस को कर सकता है, उसको हम बोलेगा क्या, सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म, राइट। यानी कि ए विल बी द करेक्ट आंसर। देन इन कंट्रास्ट टू एनलिड्स, द प्लेटीहेल्मिन्थेस shows, कंट्रास्ट टू एनालिडा द प्लेटीहेल्मिन्थेस shows, यानी कि ऐसा क्या चीज़ है प्लेटीहेल्मिन्थेस में है लेकिन एनालिडा में नहीं है। एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, प्रेजेंस ऑफ सीडोसिल, ऐसी चीज़ जो कि एनालिडा में नहीं है लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस में है, राइट। एब्सेंस ऑफ सीडोसिल, ये तो एनालिडा में है ही नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। रेडियल सिमेट्री, ऐसा एनालिडा में है क्या, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। बायलैटरल सिमेट्री, दोनों में है बायलैटरल सिमेट्री। एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, यस, एनालिडा में क्या है, ट्रू यूसिलोमेट, बट प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या है, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में बॉडी कैविटी का एब्सेंस है लेकिन ऐसा एनालिडा के पास नहीं है, दे आर यूसिलोमेट, यानी कि आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज pseudocyl, as why the body cavity of the ascaris is pseudocyl, as it is filled with pseudocoelomic fluid, has very little parenchyma, contains large cells termed pseudocoelocytes, bound extremely by the muscle layer and internally by the intestine. Yes, it is the correct answer. Why pseudocoel? सीरोसिल का मतलब क्या, जस्ट सीलम का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा पाउचेस होंगे, राइट, लेकिन पूरा कंप्लीटली देर इज नो गैप बिटवीन द गट वॉल एंड द बॉडी वॉल। बॉडी वॉल का मतलब जो मस्कुलर लेयर है, एक्सट्रीमली मसल लेयर जो है, और अंदर से गट वॉल, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं सिलोम। जिसके पास ये पूरा पूरी सिलोम है उसको हम बोलते हैं क्या, सीरोस, ट्रू सिलोमेट। जिसके पास है नहीं वो एसिलोमेट, जिसके पास थोड़ा बहुत डेवलप हुआ पाउचेस डेवलप होंगे उसको हम बोलते हैं क्या, सीडोसिलोमेट्स। यानी कि सीडोसिल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दिस इज बाउंड बाय द मसल लेयर एंड इंटरनली बाय द इंटेस्टाइन्स, राइट। लेकिन इसमें थोड़ा पाउचेस है, बट डेफिनेशन के हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर। The next, which of the following helps in excretion and osmoregulation in the flatrons? Phlegm cells, nephridia, Malpighian tubules, and green glands. We have studied it many times, so without thinking, we can say that it is the phlegm cells which helps in excretion and osmoregulation in the flatrons, right? In the answer, A will be the correct answer. Next, uh, which of the following is non-liver fluid? Taenia saginata, Taenia solium, Fasciola hepatica, and Cystoma. It is given in the NCERT. The which of the following is a liver fluid? नाम से पता liver fluid. You can see liver hepatica. Hepatic means fluid. Fasciola is there. So fasciola hepatica is also known as liver fluid, right? यानी कि answer C will be the correct answer. Okay, let me show you the NCERT. This one, liver fluid. The function of the phlegm cells are digestion and excretion, attachment and osmoregulation, encourage and excretion and osmoregulation. Right? It is given in NCERT also. You can see here the specialized cells called the phlegm cells which help in osmoregulation and excretion. Right? यानी कि जो फ्लेम सेल्स का फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर। Which is true for flatworms? Bilaterally symmetrical, triploblastic body plan, acoelomate animals, all of this above. Oh, let us have a look on NCERT.
You can see here the flatworms are bilateral symmetrical, triploblastic and acelomate animals, right? तो इससे क्या होगा आंसर? यस, ऑल ऑफ दिस. बायलेटरल सिमेट्रिकल भी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, एस्लोमेट भी है, यानी कि 4 is the correct option, that is all of this. Consider the following statements. Platyhelminthes are acoelomates and use protonephridae as excretory structures. Then Aschelminthes are pseudocoelomates and have bilateral symmetry. Adult echinoderms show radial symmetry and exhibit deuterostome type embryonic development. Which of the above statements are true? Right? कौन सा सही है हमको ढूंढना है. प्लेटिहेल्मिन्थेस आर एसेलोमेट, इतना तक सही है. यूज प्रोटोनेफ्रिडे एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, यस ये भी है, बिकॉज नेफ्रिडे इज स्टार्ट फ्रॉम एनालिट्स एंड प्रोटोनेफ्रिडे इज स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेटिहेल्मिन्थेस. एस्केलमिन्थेस यानी कि ये सही है. एस्केलमिन्थेस आर सीडोसेलोमेट्स, ये तो हमने बहुत बार पढ़ चुका है. एंड हैव बायलेटरल सिमेट्री, ये भी है. एडल्ट एकानेडम शो रेडियल सिमेट्री एंड एग्जिबिट ड्यूटरोस्टम टाइप एम्ब्रियन डेवलपमेंट, यस ये याद रखना है. देर इज टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन एकानेडम. जो एडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, जबकि जो यंग है लार्वल स्टेज दे शो व्हाट बायलेटरल सिमेट्री, राइट. याद रखना ये, यानी कि ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि 1 2 and 3. सो आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. The body cavity of Ascaris is pseudocele as it's filled with the pseudocoelomic fluid, has very little parenchyma, contains large cells termed pseudocelocytes bound extremely by the muscles layer and internally by the intestines. Yes. So answer we have also studied in the previous questions also. So answer क्या हो जाएगा? Answer 4. That is bound externally by the muscle layer and internally by the intestine. यानी कि it is like this. ये अगर ये हो गया बॉडी वॉल यानी कि एक्सटर्नल मसल, एंड ये होगा गाट वॉल. दिस इज द गाट वॉल. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू नेमाटोड्स? राउंडवर्म, नेमाटोडा मीन्स एस्केलमिन्थिस. राउंडवर्म, फिलेरियल वर्म, हुकवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म, रिंगवर्म एंड अर्थवर्म. You can cut some options directly, like earthworm cannot be because it's an annelids. Tapeworm is a platyhelminthes, ये नहीं हो सकता है. उसके बाद राउंड वर्म तो उसका मीनिंग ही है. फिलेरियल वर्म, फिलेरियसिस है. हुक वर्म एंड रिंग वर्म इज व्हाट? देयर इज अ फंगस, ये भी नहीं हो सकता है. यानी कि राउंड वर्म, फिलेरियल वर्म, हुक वर्म एंड पिन वर्म, दिस बिलोंग्स टू द फाइलम नेमाटोडा. सो यानी क्या होगा? 4 ऑप्शंस सही है. सो D will be the correct answer. Next, the body of the dash is circular in cross section, hence the name roundworms. They may be free living, aquatic, and terrestrial, or parasitic in plants and animals. The body of the Aschelminthes, con this Aschelminthes, is circular in cross section, hence the name roundworms. They may be free living, aquatic, and terrestrial, or parasitic in plants and animals. So पता ही चल गया किसका बात कर रहा है? The body of Aschelminthes, yes. D is the correct answer. Then which of the following is not true for roundworm? The options say complete alimentary canal. Yes, ये सही है because they have complete digestive system and they have mouth and anus also. If I give an example of this is Ascaris. So this is the mouth and this is the anus, right? So अगर two openings है इसको हम बोलेंगे complete digestive system, right? Complete alimentary canal. Well developed muscular pharynx here, ये आंसर के लाइन है, you can see, and both longitudinal and circular muscle presence is only in annelida, right? Annelids. This is not present in the that Aschelminthes. यानी कि not true कौन सा गलत हो जाएगा, false कौन सा है? That is C is the correct option. And sexual dimorphism we have studied many times that they show sexual dimorphism. The male and the females are different. We can identify morphologically, right? Next, a phylum which are multicellular having bilateral symmetry and with false coelom, right? False coelom.
Platyhelminthes, Aschelminthes, Nemathelminthes, both 2 and 3. False सिलम मतलब false मतलब its meaning दिया है. Actually false, the it comes from the word pseudo, right? Pseudo सिलम का मतलब क्या है? Pseudo सिलोमेट यानी कि pseudo का word, this pseudo word का meaning होता है false, and सिलोमेट means सिलोम. So false सिलोम pseudo सिलोम कौन शो करता है? Aschelminthes. And Aschelminthes का another name क्या है? Nemathelminthes, also known as nematode, यानी कि both 2 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? which of the following is true for the given diagram? Male roundworm, female roundworm, dioecious, both 1 and 3. So let's see NCT what this diagram is. You can see it is the male, right? The diagram is given is the male roundworm. So given diagram is what? Male, female तो नहीं है. Dioecious ये तो किसी का भी हो सकता है, right? Why they are dioecious? They needs two for the reproduction. That is why दो को चाहिए dioecious. ऐसे भी याद रख सकते हो. So male roundworm and dioecious, यानी कि both 1 and 3 is the correct. So D will be the correct answer. Next, ankylostoma is also known as pinworm, hookworm, flatworm and fillet-worm. ये सोचने का बात नहीं है. You can see डायरेक्ट एनसीडी में भी है. और इसका मीनिंग ankylostoma means, right, hookworm. Ankylostoma. B is the correct option, right? Which of the following is correct statement? Digestive system is incomplete in flatworms but complete in roundworms. Digestive system is complete in flatworms but incomplete in roundworm. Digestive system is complete in flatworms and roundworms. Digestive system is incomplete in flatworms and roundworms. क्या लगता है? राउंडवर्म में कैसा होता है? कंप्लीट होता है. एंड फ्लैटवर्म में क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है. ये याद रखना. बिकॉज लाइक टेपवर्म, फैस्यूला, दे हैव ओनली वन ओपनिंग. इफ यू टेक एन, suppose this is what, suppose this fasciula hepatica, just only one opening होता है, right? इसका like mouth होता है, only one opening. But if we take ascaris, इसका दो opening होता है. This is the mouth and this is anus, right? So the Aschelminthes, they have complete digestive system and flatworms यानी कि right, इसका हो गया. Platyhelminthes का क्या है? Incomplete digestive system, यानी कि आंसर 1 is the correct answer. Ascaris is characterized by presence of true coelom but absence of metamerism. Presence of true coelom. एस्करिस क्या है? एस्केलमिंथिस है. तो ट्रू सिलम का जिधर बात आ रहा है उसको काट दो. बिकॉज दे डू नॉट शो ट्रू सिलम. ट्रू सिलम हो रहा है, काट दो. प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलम, नो, ये भी गलत. एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलम सही है. प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म ये नहीं है, बिकॉज मेटामेरिज्म इज शोन बाय एनालिट. आंसर क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रू सिलम नॉर मेटामेरिज्म, राइट? यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर. विच इज ट्रू फॉर राउंड वर्म्स? राउंड वर्म के लिए कौन सा सही है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस, ये तो है. बिकॉज प्लेटीहेल्मिन्थिस में ही टिश्यू शुरू हो जाता है. उसके बाद एनालिडा दे शो व्हाट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. राउंड वर्म्स ऑल्सो. देन ट्यूब विथ ट्यूब प्लान, यस. ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान मीन्स थोड़ा बहुत सिलोम स्टार्टिंग होता है इसमें. सीडोसिलोमेट एनिमल्स ये तो है. यानी कि ऑल ऑफ दिस, राइट? आंसर डी इज द करेक्ट आंसर. Which is correct regarding roundworms? Females are longer than males, males are longer than females, monoecious, females are curved from its caudal end. क्या लगता है? Males are longer than females? No. In NCD we can compare. You can see here. See size of the females and size of the males. This is the female and this is the male. The females are larger than the. You can see here also it is given. Females are longer than the males.
राइट। सो करेक्ट चाहिए ना, फीमेल सेल लॉन्गर देन द मेल्स, ये सही है। अगर ये सही है तो मेल सेल लॉन्गर देन फीमेल्स, ये तो गलत हो गया। मोनोशियस, नो दे आर डायोशियस बिकॉज दे आर यूनिसेक्सुअल। एंड फीमेल्स आर कार्व्ड फ्रॉम इट्स कॉर्डल, नो मेल्स आर कार्व्ड फ्रॉम इट्स कॉर्डल। अगर मेल्स है तो ऐसा है, ये मेल है। मेल्स आर कार्व्ड फ्रॉम द कॉर्डल एंड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 1। थैंक यू।